case when position time graph is symmetrical about time axis. So when position time graph is symmetrical about time axis, then see here, if you take any arbitrary time t1, then at that time the position will be at the 2 points. So ideally it is not possible that at one instant the particle has two positions. So when the position time graph is symmetrical about time axis, then this is a wrong scenario. This cannot be possible. Now when the position time graph is symmetrical about position axis or line parallel to position axis, it is shown by this figure that the position time graph is symmetrical about a line which is parallel to position axis. So what it says? It says that the particle coming towards, see, if you see this figure, then here at time t is equal to 0, the position at, suppose this is our figure. So if we take, if I draw this figure here one more time, then if time t is equal to t1, the position of particle is equal to 0. Okay, and at time t is equal to 0, the particle position is equal to y or y1. Okay, so at time t is equal to 0, the particle is at y1. Afterwards, for this point, for mk part of curve, the particle is coming towards origin, or particle is moving towards its reference point, and at time t is equal to t1, the particle has moved to its reference point, so its net displacement is 0, or the particle has moved to its original point from a particular point. The particle has moved to its reference point. However, if we consider the curve KL, then for this curve the particle is having a constant acceleration, and particle is moving away from the origin and the reference point. So this is basically the position time graph of a curve which is parallel to the position axis. If I want to draw how the particle motion will be on this on a straight line, then we can say that if it is our reference point, then first particle is at here at t बराबर 0. ठीक है, t बराबर 0 पर particle यहाँ पर है. Now the particle is moving towards its reference point, and at t is equal to t1, it has moved to its reference point. तो particle यहाँ पर आ गया. Afterwards, the particle is again moving with a constant acceleration, और पार्टिकल फिर से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. सो पार्टिकल इज मूविंग हेयर टू हेयर एंड देन हेयर टू हेयर. ठीक है, सो पार्टिकल इज मूविंग इन दिस वे. सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ a curve when the line when it is parallel to position axis. Now if we see another figure, when I combine all possible types of position time graph and we draw just a figure here, if you see in this figure, suppose this is the position P. Here if you see that the position of particle is 0 till time t is equal to 4. So from this figure it is very much clear that at time, first it is clear that at time t is equal to 0, the position of particle is equal to 0. ठीक है. Afterwards the particle will not starts moving till the time t is equal to 4 seconds or just before 4 seconds. So let's consider that t बराबर 0 to t बराबर 4, velocity is equal to 0 and the position of particle is equal to 0. Afterwards the particle will experience a constant acceleration
till the point t is equal to 8 seconds. See, till the point t is equal to 8 seconds, till the point t is equal to 8 seconds, the particle is having parabolic curve. ठीक है, सो t बराबर 8 सेकेंड्स तक पार्टिकल का पैराबोलिक कर्व है. आफ्टरवर्ड्स पार्टिकल इज हैविंग अ स्ट्रेट लाइन टिल t इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स. सो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स से t इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स तक पार्टिकल का एक स्ट्रेट लाइन मोशन है. इट मीन्स कि दिस पीरियड ऑफ टाइम में t इज इक्वल टू 8 से t इज इक्वल टू 18 सेकेंड तक पार्टिकल इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, सो पार्टिकल इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो यहाँ पर t बराबर 4 to 8 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन है, आफ्टरवर्ड्स इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है. और t इज इक्वल टू 18 से आफ्टरवर्ड्स टिल t इज इक्वल टू 22 सेकेंड्स, और बेसिकली t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स का हो, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स पर स्लोप इन जो पैराबोलिक कर्व है वो फिर इन्वर्टेड है, और इट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रिटार्डेशन मिलेगा. दिस पैराबोलिक कर्व इज हैविंग स्लोप टुवार्ड्स दिस पोजीशन एक्सिस. सो यहाँ पर रिटार्डेशन मिलेगा, और एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है. इट मीन्स कि पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कांस्टेंट रह रहा है और वेलोसिटी जीरो हो रहा है. सो हम लोग बोल सकते हैं कि इस फिगर में t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन 0 था, 0 to 4 सेकेंड्स में पार्टिकल में कोई मोशन नहीं था. आफ्टर 4 सेकेंड्स टू 8 सेकेंड पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग. फ्रॉम 8 to 18 seconds the particle is having uniform motion, and from 18 to 20 seconds particle is retarding and comes to rest at t is equal to 20 second. Afterwards its rest it will be at rest till t is equal to 22 seconds. Now we will draw distance time graph. अभी तक हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी इसको बोल सकते हैं. नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ. सो यदि y एक्सिस पे डिस्टेंस हो, x एक्सिस पे टाइम t हो, देन एंड इफ द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस पार्टिकल का कांस्टेंट है टाइम चेंज होने पर भी. व्हाट इट मीन्स कि पार्टिकल इज एट रेस्ट. इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिकल किस में है, पार्टिकल रेस्ट में है, बिकॉज डिस्टेंस इसका कांस्टेंट है. सेकेंड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, यदि यूनिफॉर्म स्पीड में पार्टिकल होगा तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मेकिंग सम एंगल थीटा विद द टाइम एक्सिस. सो इससे थीटा एंगल ये बना रहा है टाइम एक्सिस से, और स्पीड कितना के बराबर हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा tan थीटा के बराबर. ठीक है, सो ये क्लियर है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक पैराबोलिक फंक्शन होगा. डिक्रीजिंग स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक इनवर्स पैराबोलिक होगा. ठीक है, सो फॉर दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग स्पीड. इसमें हर एक जगह पर स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. स्लोप इंक्रीज हो रहा है मीन्स की स्पीड इंक्रीज हो रहा है, और एक्सेलरेशन a इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है. ठीक है, for this curve. Distance time graph for decreasing speed. Distance time graph for decreasing speed में स्पीड के लिए तुम देखो कि यहाँ पर जो स्लोप्स है ना वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, एज द स्लोप इज डिक्रीजिंग, सो बेसिकली its speed is decreasing, and we can conclude that the acceleration, a negative acceleration is acting on the body, and this is the distance time graph. देखो यहाँ पर के बाद मैं इसको छोड़ दिया हूँ. क्यों मैं छोड़ दिया हूँ, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी किसी पार्टिकल का डिस्टेंस घट करके 0 नहीं हो सकता है. ठीक है, डिस्टेंस मस्ट बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी. सो एट t बराबर 0 डिस्टेंस इज एट 0. आफ्टरवर्ड्स डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. ऑल द पार्टिकल इज the velocity of particle decreasing, that's why it's eventually comes to the rest, but total distance will be this much. यदि यही डिस्प्लेसमेंट होता, so after some period of time due to this deceleration the particle will the net displacement will be reduced to 0, and the complete position time graph will be like that. but ये चूँकि distance time graph है, so it will stop here only.
because once the particle, now if I ask that is this distance time graph in the below figure is correct or not, okay, so distance time graph of this figure is correct or not. So if you see that distance time graph must be an increasing curve and it never comes back towards origin because distance never decreases with time. So such type of graph is valid up to point A only. After point A it is not valid as shown in the figure. मैं इसको ऑलरेडी बोल चुका हूँ बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है तो करेक्ट होता है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा कि आफ्टर टाइम आफ्टर पॉइंट ए पार्टिकल का पॉइंट ए पे स्पीड क्या हो गया, जीरो हो गया है, ठीक है. सो बिकॉज अब यदि स्टिल मान लो कि एक्सलेशन निगेटिव डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है तो पार्टिकल विल मूव इन द निगेटिव डायरेक्शन एंड इट्स डिस्टेंस विल स्टिल इंक्रीजिंग, ठीक है. डिस्टेंस क्या होगा, स्टिल उसके बाद भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है. सो नाउ वी विल सी सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड